So let us discuss about the data variables in C. So you already know कि data variables का मतलब क्या है. What do you really mean by data variables? So data variables is kind of a container where you can store your different kind of data items. For example, if you have an integer number, you need something a variable that where you can store this integer number. If you have a character variable, you need something where you can store this character variable. If you have a floating point variable, you need something where you can store this floating point variable. So basically in C language, you have 4 fundamental data variables, and these are your character, integer, float and double. तो आपके पास C लैंग्वेज में हमारे पास फंडामेंटल वेरिएबल्स हैं कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट एंड डबल. तो अब यहाँ पर अगर आप कैरेक्टर की बात करेंगे, सो द साइज ऑफ अ कैरेक्टर इन C लैंग्वेज इज ओनली 1 बाइट. जो C लैंग्वेज है वहाँ पर जो कैरेक्टर होता है वो 1 बाइट का होता है, एंड दे यूज ASCII कोड टू स्टोर दीज कैरेक्टर्स. तो यहाँ पर जो कैरेक्टर्स हैं वो ASCII कोड की फॉर्म में स्टोर होते हैं. बट इफ यू लुक एट द लैंग्वेजेस लाइक जावा और .NET, सो इन दोज लैंग्वेजेस वी यूज यूनिकोड टू रिप्रेजेंट द कैरेक्टर्स. और जावा के अंदर जो वेरिएबल का साइज है, द साइज ऑफ द कैरेक्टर वेरिएबल इन जावा देयर इज 2 बाइट्स, बिकॉज वहाँ पर यूनिकोड यूज होता है, तो वहाँ पर उसका जो साइज है वो 2 बाइट्स है. लेकिन सी लैंग्वेज के अंदर द साइज इज ओनली 1 बाइट. सेकेंडली, we have a variable integer. So this variable integer is used to store integer variables, right, integer numbers. And we have float here, so which is IEEE 754 standardized format. So this is basically a single present floating point number. And then we have double, which is a double present floating point number. So before we start, let me give you a brief idea behind all of these things. इसका मैं कुछ आपको brief idea देता हूँ, then we can understand and learn a lot of things from here. Okay. So basically in your C language, when we have an integer as a data type, अब ये जो integer as a data type है, the size of integer was not fixed, it was dependent on compiler as well as on platform in C language. So you can also find out in some books they have written the size of integer is only 2 bytes, and in some books they are using the size of integer is 4 bytes. So because जो integer का size है that is dependent on your system as well as, you know, as I said, platform as well as system. जैसे कि अगर आप turbo C++ यूज करेंगे, if you are using this turbo C, so in your turbo C you will find out the size of integer is only 2 byte. But if you are using GCC or if you are using compiler like dev C++, right, so a lot of compilers are there, a lot of online compilers are there. In all of those compilers you will find the size of integer is 4 bytes. Secondly, these integers store the negative numbers in 2's complement format. ये 2's complement में negative number को store करते हैं. So in your digital logic subject, you have seen कि 2's complement format क्या होता है, what is the benefit of using 2's complement format. So your integers are you storing the negative numbers in 2's complement format. So that means इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपका integer का size 2 byte है, if the size of integer is 2 byte, that means the minimum number that we can store is minus 2 raised to power 15 to maximum number that we can store is plus 2 raised to power 15 minus 1, which is equal to minus 32768, and this is my plus 32767. This is typically that you study in your books. But if your integer is of 4 byte, in that case the minimum value that you can store is minus 2 raised to power 31 to the maximum value is plus 2 raised to power 31 minus 1. ठीक है, बिकॉज 2 बिट्स के अंदर, 2 बाइट्स के अंदर हमारे पास 16 बिट्स होती है, दिस इज बेसिकली 32 बिट्स. तो अगर आपके पास n बिट्स हैं, इफ यू हैव n बिट्स इन 2's complement format, the minimum number that you can store is minus 2 raised to power n minus 1, and the maximum number that you can store is plus 2 raised to power n minus 1 minus 1. So same formula I've used here. यहाँ पर आपके पास 4 बाइट्स का एक वेरिएबल है. So 4 bytes means it is 32 bits. 4 bytes का मतलब है 32 bits हैं. So जो minimum number store होगी वो होगी minus 2 raised to power 31, और जो maximum number store होगी वो plus 2 raised to power 31 minus 1. So in this manner I can store numbers in an integer. Plus I can also make these integers as an unsigned integer. हम integer को unsigned integer भी बना सकते हैं. I'm going to discuss about them very soon. But when we say about these C characters, अगर हम C में कैरेक्टर्स की बात करेंगे, सो बाय डिफॉल्ट द कैरेक्टर्स आर साइंड कैरेक्टर्स इन C, एंड दीज कैरेक्टर्स आर ऑफ 1 बाइट. कैरेक्टर जो है वो 1 बाइट है.
So minimum number that you can store in character is minus 2 raised to power 7 to the maximum number is plus 2 raised to power 7 minus 1, which is equal to minus 128 to plus 127. So these are the values that you can store in a character variable. अब जो भी characters हैं, जैसे I can say we have a character variable a and it is storing a character as small a. तो ये जो small a है, small a is just a symbol, it is having some assigned value. तो small a की जो ASCII वैल्यू होती है that is 97. So you can see the ASCII table. बाद में मैं इसको आपको ASCII table में आपको show भी करूँगा. So here we can use an ASCII table. In the same way, if I say character a is equal to capital A, so this capital A is having a ASCII decimal value which is equal to 65. इसकी जो decimal value है वो 65 है. Okay? So I think you should know about these variables. कि इन सभी variables की range क्या है और इनका मतलब साइज सेम होता है या नहीं होता, ठीक है. सो हियर यू कैन सी वी हैव इंटीजर्स. ये जो कीवर्ड्स हैं दीज आर कॉल्ड एज कीवर्ड्स. शॉर्ट, अनसाइंड, शॉर्ट, अनसाइंड, दीज आर कीवर्ड्स. ये सभी जो है कीवर्ड्स हैं. अब जनरली क्या होता है कि जो शॉर्ट इंटीजर है, द साइज ऑफ शॉर्ट इंटीजर इज ऑलवेज फिक्स्ड इन एनी प्लेटफॉर्म. शॉर्ट इंटीजर का साइज जो है, चाहे आपके पास 16 बिट प्लेटफॉर्म हो और इवन इफ यू आर यूजिंग 32 बिट और 64 बिट और इवन इफ यू आर यूजिंग अ turbo C compiler or even if you are using a GCC compiler, any compiler you are using, any platform you are using, the size of short integer is always 2 bytes. इसका जो size है वो हमेशा 2 bytes ही रहेगा. So if I am going to use short integer, that means it is always 2 byte. Doesn't matter what the compiler is, what the operating system is, what the platform is, doesn't matter at all. So the minimum value of short integer is minus 32768 to the maximum value is plus 32767. So the format specifier that we can use is %HD. And after this we have unsigned short integer. So with the help of this short integer I am using a keyword as unsigned. तो unsigned का मतलब ये है कि हम इसमें नेगेटिव पार्ट को हटा देंगे. वी आर नॉट गोइंग टू यूज नेगेटिव पार्ट. ऑल द नंबर्स विल बी पॉजिटिव. सो द मिनिमम नंबर विल बी 0 एंड द मैक्सिमम नंबर हियर विल बी 65,535. तो ये जो मैक्सिमम नंबर है, मैक्सिमम नंबर कैसे आई? सो दिस मैक्सिमम नंबर इज बेसिकली 2 raised to power 16 minus 1 and this minimum number is 0. So we have 0 to 2 raised to power 16 minus 1. And after this we have unsigned integer. So जो integer का size है, if I just write the keyword integer, so the size of integer keyword is dependent on your system. So again as I said, अगर आपके पास 16 bit या 8 bit system है, in that case the size of integer is only 2 bytes. Or if you are using a turbo C compiler, the size of integer is 2 byte. But if you are using a 32 bit and 64 bit system, in that case the size of integer is 4 bytes. ठीक है? So I'm going to assume here the size of integer is always 4 byte on my system. तो यहाँ पर जो unsigned integer है, so because I'm using a keyword as unsigned, therefore the minimum value here is going to be 0 and the maximum value here, ये जो maximum value है, this is going to be plus 2 raised to power 32 minus 1. तो जो maximum value है ये इसके equal होगी यहाँ पर, ठीक है? And the format specifier that we are going to use is %u. So in most of the cases I'm going to use this %u format specifier. तो जो %u है वो unsigned integer के लिए यूज होता है. So I'm going to use it very very frequently while writing the programs. Second is your integer. So if I'm just writing integer, integer means it can be a short integer, it can be a long integer, doesn't matter. किसी भी तरह का integer हो सकता है short. I'm so sorry. So second is an integer. So integer means it is signed integer. Integer मतलब ये है कि ये सिर्फ signed integer है. I have to use the keyword unsigned here specifically to tell कि ये एक unsigned integer है. But if I'm just writing integer, that means it is a signed integer. So the minimum value here is minus 2 raised to power 31 to maximum value is plus 2 raised to power 31 minus 1. And the format specifier that I'm going to use is %d. हम यहाँ पर %d को as a format specifier की तरह use करेंगे. Okay? After this you have long integer. So the size of long integer is always the same. देखो जैसे मैंने आपको बताया था, size of short integer is always same, doesn't matter whatever the platform is. Size of long integer is always the same, doesn't matter whatever the platform is, correct? But size of integer can change. Integer का जो size है वो change हो सकता है. Short integer का same रहेगा और long integer का भी हमेशा same रहेगा. So long integer is always of 4 byte. जो long integer है वो हमेशा 4 bytes के ही रहते हैं.
So I have to use the format specifier as percentage LD. This is L and that is D. Okay, and then we have unsigned long integer. Again it is of 4 bytes. So because we are using a long integer, तो इसका जो size है वो 4 byte ही रहेगा. And the format specifier is percentage LU. Then we have long integer. So as I said, long integer was introduced in later versions of C language. So the size here is 8 byte, और जहाँ जो minimum value है that is -2 raised to power 63 to maximum value is +2 raised to power 63 minus 1. And the format specifier is percentage LLD. तो यहाँ पर LLD को हम format specifier की तरह use करेंगे. And after this we have unsigned long integer. So again the size is 8 bytes and the format specifier is percentage LLU. तो यहाँ पर जो format specifier है वो percentage LLU है. And you can see it can store a very big value. ये एक बहुत बड़ी वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं. This value will be +2 raised to power 64 minus 1. तो जो वैल्यू है वो इसके इक्वल होगी. Okay. Then you have signed characters. So characters by default they are signed. So these characters are having minimum value of -128, maximum value is 127, and the format specifier is percentage C. If I say we have unsigned characters, that means minimum value is 0 to maximum value is 2 raised to power 8 minus 1, so which is 255, and the character is percentage C, I mean the format specifier. Then we have float. So if I use float, the size of float is 4 byte. Okay. And the format specifier is percentage F. Then we have double. So size of double is 8 bytes. So you can see these floats are single precision IEEE format. ये single precision है. That means it can store ना जो point numbers होते हैं उसमें कम range की point number store की जा सकती है. And then we have this is as double precision. ये आपकी double precision है. So we are going to cover what is this IEEE format, what is single precision, what is double precision in your computer architecture. तो वहाँ पर हम इन IEEE फॉर्मेट्स को भी इन डिटेल कवर करेंगे. ओके, सो फॉर डबल वी यूज परसेंटेज LF. तो यहाँ पर हम परसेंटेज LF को यूज करते हैं. एंड देन वी हैव लॉन्ग डबल हियर. तो जो लॉन्ग डबल है, सो द साइज ऑफ लॉन्ग डबल्स इज 12 बाइट्स. जो लॉन्ग डबल का साइज है वो 12 बाइट है. एंड फॉर्मेट स्पेसिफायर इज ऑल्सो परसेंटेज LF. ओके, सो टू चेक द साइज ऑफ एनी वेरिएबल, अगर आपके आई थिंक दिस प्रोग्राम शुड बी विजिबल, एंड इफ इट इज नॉट विजिबल आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड द PDF फाइल विद यू गाइस. तो जो भी आपके पास यहाँ पर वेरिएबल्स हम लोग यूज कर रहे हैं, वी कैन यूज द साइज ऑफ फंक्शन टू फाइंड आउट द साइज ऑफ एनी वेरिएबल और एनी नंबर. तो ये जो साइज ऑफ वेरिएबल है, जो साइज ऑफ फंक्शन है, दिस साइज ऑफ फंक्शन is basically it is going to return the size of a particular data type or a value in an unsigned format. जो size है वो यहाँ पर unsigned format में ही return होगा. जैसे here I'm taking integer a is equal to 1, so there is a variable a and the value stored is 1. तो यहाँ पर value stored है वो 1 है. Then integer b is equal to g, so there is a variable b and here I'm going to store g. अब g का मतलब क्या है? So capital A is having a SKY value 65, B is having 66, C is having 67, D is having 68, E is having 69, F is having 70, G is having 71. So that means here we are going to store a value 71. जब हम यहाँ पर store करने की कोशिश करते हैं in your character, so equivalent SKY value 71. So I'm going to store 71 here. Then we have double C is equal to 3.14. So this is basically a double precision format. So I'm going to store 3.14 in double precision IEEE format. तो अगर हम यहाँ पर प्रिंट करेंगे साइज ऑफ कैरेक्टर, तो साइज ऑफ कैरेक्टर जो भी साइज होगा, दिस साइज ऑफ कैरेक्टर विल रिटर्न दिस वैल्यू. एंड बिकॉज जो साइज ऑफ कैरेक्टर है इसकी जो भी वैल्यू होती है, दिस साइज ऑफ फंक्शन रिटर्न्स अ अनसाइंड इंटीजर. साइज ऑफ फंक्शन जो है वो अनसाइंड इंटीजर को रिटर्न करता है. सो इट विल रिटर्न द साइज ऑफ कैरेक्टर विच इज 1 बाइट, जो कि 1 बाइट के इक्वल है. एंड हियर दिस b इज गोइंग टू रिटर्न इट्स वैल्यू दैट इज g, और ये जो b की वैल्यू है वो यहाँ पर प्रिंट होगी विच इज परसेंटेज c. तो जो भी फॉर्मेट स्पेसिफायर है, जहाँ पर आपका फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज्ड है, वहाँ पर वैल्यूज को हम लोग प्रिंट करेंगे. ओके, हियर यू कैन सी वी आर हैविंग a as well as size of integer. So the value of a will be printed here where percentage d is written,
and the value of size of integer will be printed here where percentage LU is written, because this size of integer, size of function returns a unsigned value. Okay, so in this manner you can execute this program to check the size of each of these data variables. Anyways, as of now this function is this program is not of your use, ये आपके लिए use नहीं है. The only thing that you should gain from this video is what is the size of these data variables and then what is the format specifiers. सबका size क्या है, format specifiers क्या है और उनकी range क्या है. These are the three things that is important for you guys. अगर आपको ये तीन चीज़ समझ में आती है इस वीडियो के अंदर, there is more than enough. Okay. So consider this program. So I've taken this program for your understanding. तो यहाँ पर क्या है, you can see that we have unsigned integer x is equal to -1. And let us assume the size of integer is only 2 bytes. Integer का size है वो सिर्फ 2 bytes है. So here we are having unsigned integer. Unsigned integer. तो जो unsigned integer है उसमें -1 values नहीं होती. But again in C language we represent the negative values with the help of 2's complement format. So that means this variable x is going to store this value into 2 bytes and this value is going to be 111. That is 2's complement of -1. तो जो -1 है उसका 2's complement आपके पास ये होने वाला है. Then here we are using integer by is equal to bitwise not of 0. तो हम यहाँ पर 0 का bitwise not use करेंगे. तो जो 0 है 0 कुछ ऐसे स्टोर होगा आपके पास मेन मेमोरी के अंदर 0 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 0. Okay, and if I take a bitwise not, ये जो operator है this is representing a bitwise not operator. So that means these values are going to be 1 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 1. So you can clearly see this value and this value both are exactly the same. So if you are going to compare these values, it is going to print same. तो जो है ये प्रोग्राम जो है वो यहाँ पर same को print करेगा. Okay, but anyways let us skip this part as of now. So why I'm saying skip it, because let us do one thing. I've covered a lot of problems like this in your next chapter, that is your structures of C program. तो आप अगर आप next chapter को start करेंगे, so in your next chapter I've given specifically many programs. I've explained you how to predict the output of those programs as well as if I execute those programs what is the output. तो वहाँ पर मैंने कुछ practicals भी लिया है, plus I've tried to explain you कि हर एक program का output कैसे predict करते हैं. So let's start with the next chapter. वहाँ से start करते हैं, then you will learn a lot of things, and then from the third chapter onwards, I will make it a better way. Okay, so let's start from the next chapter now.